Greetings everyone, we are Team Tech Fixer and we are back with our case ID 1691. The problem title states adaptation of existing command area in response to shifting of agricultural practices. As we all know, dams and reservoirs both were built years ago, and due to the population change, climate change and shifting in agricultural activities, there is an urgent need to look after the infrastructure of these architectures. So, in this problem statement, we have to tackle the sustainability, safety and resilience of dams and reservoirs both. Along with that, we have to handle the water resource management and also how we can help the farmers to connect with the new technologies. So our approach towards this solution is divided into multiple factors, and all these factors includes one common aspect, and that's AIML. We have used AIML for risk prediction in a way that it monitors the dam safety and immediately send alert to the admin if in case the dam is found or likely to be found in danger. We've also used AIML for smart water distribution and tech recommendation to farmers so that they can stay updated with latest trends in technology and use them in farming. The another factor of our solution is fully furnished complaint box, where a user is not just having the access to register and file their complaint, but also can re-raise their complaint if it goes unnoticed by admin after a certain period of time, and can also track the status of their complaint. On the other hand, the admin has the facility to accept or reject the complaint from user, and also all the complaint will directly be pinned up in the map with yellow color, and if in case any user re-raises the complaint after a certain period of time, that pinned complaint with yellow color will change its color to red and easily get attention of the admin. By now, you must be wondering how all these factors are connected to each other. We all know Dams of India has already multiple inbuilt sensors in them. Using those inbuilt sensors like pressure sensors, acoustic sensors, flow sensor, etc., will figure out the structural data of the dam as well as the weather data of the dam. Once we have the structural data of the current dam and the weather data of the current dam, we'll compare it with the previous risk factors and previous trends using an ML model. The ML model will accurately tell us which dam is under risk and immediately send alert to the admin if the dam is likely to be found in danger. In the dam risk management, we first calculate the sedimentation data like its height, its age, and what type of material it is made. And we calculate the weather information and sedimentation information of the dam. And we have a surveillance team which can detect the crack on the dam using our ML model. Based on all these parameters, we analyze based on our previous trends and our ML model that if the dam is under risk or not. Suppose if the dam is under good condition, then it will highlight as a green color on our map. But if the dam is under moderate or in a high rated condition, then it will highlight as a red color, and an alert is sent to the admin directly. ये हमारा कंप्लेंट पोर्टल है जिसके अंदर हम या कोई भी सिटीजन या कोई भी फार्मर जिसे कोई भी पानी के रिलेटेड इशूज़ आ रहे हैं वो इसमें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। सो मैं आपको कंप्लेंट रजिस्टर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना नाम डालेगा फार्मर जो भी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो अपनी प्रॉब्लम थोड़ा बताएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे पानी आज कल कम आ रहा है एंड किसी दिन तो आ ही नहीं रहा है। अब फार्मर अपनी इमेज अपलोड करेगा। यहाँ पे मेरे को रैंडम इमेज ले रहे हैं अपलोड करने के लिए। ओके, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम फ़ोन नंबर एंड ईमेल देंगे जो भी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा है, सो दैट वी कैन रिवर्ट बैक एंड सबमिट कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका एडमिन पैनल साइट जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग एक्सेस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी अभी करंट लोकेशन पे जहाँ से ईमेल सेंड हुआ है, जहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। एंड अब मैं इसको आपको अपने डैशबोर्ड में दिखाता हूँ। हमारे डैशबोर्ड में यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स हैं, एक्टिव कंप्लेंट्स हैं, वो यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम और डिस्क्रिप्शन, कोऑर्डिनेट्स, एड्रेस के कोऑर्डिनेट्स आ रखे हैं, इमेज हमारी डेटाबेस में स्टोर रखी है, फ़ोन नंबर एंड यहाँ पे ईमेल कॉन्टैक्ट के लिए। सपोज जस्ट इन केस अगर एडमिन को फील होता है कि ये स्पैम है या फिर फेक कंप्लेंट है, तो वो यहाँ से कंप्लेंट को डिलीट कर सकता है। एंड जेन्युइन कंप्लेंट है या फिर कंप्लेंट आपको सही लग रही है, तो यहाँ से सेंड ईमेल करके वो कंफर्मेशन सेंड कर सकता है कि आपकी कंप्लेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ से मैंने ईमेल सेंड कर दिया और अभी मैं आपको अपनी ईमेल आईडी पे जाकर दिखाऊंगा कि हमारे सर्वर से ईमेल सेंड हो रही है। ये देखिए अभी बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर ईमेल सेंड हो चुकी है। यहाँ देखिए थैंक्स फॉर ईमेल सेंड, ये अभी हमारे टीममेट की ईमेल आईडी में लगी हुई है। फॉर नाउ एज कोई भी फार्मर, कोई भी सिटीजन या फिर कोई भी व्यक्ति जिसे पानी के रिलेटेड कोई भी समस्या है, वो अथॉरिटीज़ तक अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, जिससे कि उसको उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। Coming to the next part of our solution, we have generated an environment for the farmers who are confused with what technology to use to produce more yield. In this, we have taken into consideration both the farmers who are good with tech and are literate, and who are not good with tech and are illiterate. So basically, in this we have two modes, online mode and the offline mode. In the offline mode, the farmer have two options. Either they can call to a toll-free number and connect with our expert who will suggest the best technology to the farmer. Otherwise, they can join a community chat where they can discuss their crop choices and share some tips to each other. The another one is the online one, where the farmer will have to provide the weather information, soil information and the crop information. Then our system will showcase all the best technologies that are being used in that particular area for that particular crop. After that, our system will compare all those technologies and will suggest the best technology to the farmer with a tutorial video if it is available on web. So with the help of water requirement analysis tool, we can measure the quantity of water required for a particular type of a crop. Let's take a look at the crop water analysis tool. So with the help of a water requirement analysis tool, we can measure the water requirement of plant with the help of basic 4 units like soil type, region, temperature and weather. So let's check. Banana, soil type humid, region, desert, temperature 30-40 and weather wind. Okay, 9.6 liter per meter square. Okay, let's check one more crop. And the calculation is 0.3 liter per meter square. Soil humid, desert, temperature let's select 20-30 and the weather sunny, and it's a 10.6 liter per meter square.
Now coming to what makes our solution unique. Number one is our fully furnished complaint box that acts as an interface between the user and the admin. Number two is AIML integration. Our solution combines risk prediction, water optimization, and tech recommendation for farmers using AIML models. Number three, and the most important aspect that makes our project unique, is voice-enabled chatbot Sophia that allows user to interact with our system using voice commands and तो मैं आपको अपना AI चैटबॉट हम इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। ये AI चैटबॉट इसका बेसिकली जो मेन पर्पस है वो ये है कि कोई भी फार्मर या किसी को भी अगर सपोज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी उन्हें पूछना है जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पास आकर के हेल्प ले सकते हैं। सपोज इफ इन केस आवर टीम इज करंटली ऑफलाइन। ओके, सो फार्मर यहाँ पे इमेज अपलोड कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमने अभी कोई इमेज अपलोड करी है एंड हमारा जो AI चैटबॉट है वो बताएगा कि ये इमेज क्या है या क्या कर रही है। This is a drone. It is flying over a field. It is likely being used for aerial photography or videography. ओके, सो आपने सुना हमारे चैटबॉट ने एक्जैक्टली डिटेक्ट कर लिया कि इसके अंदर क्या है। So the future scope of our project is AI integration and automation, implementing an AI chatbot supporting multiple native languages for user support, and use AI for accurate prediction and automate the response during an admin absence, and machine learning for trend analysis, leverage the ML to study the trends of better insight and enhancing the decision making and providing the system efficiency.